So before we formally start our program, as the principal, let me announce few things. Today, as we know that this is Teachers' Day, and we celebrate Teachers' Day in a different way. That few schools only are celebrating in that way. So today, the student principal that we have appointed to Mr. Samar Talib. And Mr. Niamatullah has been appointed as the proctor. And one thing that is going to happen this time, that today's morning assembly will be presented by the teachers, not by the student teachers, but by your original branded teachers. Right? So, very respected principal sir, all the student teachers and my dear friends. I am the host of today's morning assembly. We have a list of programs that we are going to present today. So first of all, may I call Miss Badre Munir, please start the program with the morning assembly. Miss Badre Munir, please come over the dais. Good morning. I am Badre Munir. Please join me in the school prayer. In the name of God, the beneficent, the merciful. Praise be to God, Lord of the world, the beneficent, the merciful, Master of the day of judgment. Thee alone we worship. Thee alone we ask for help. Show us the straight path, the path of those whom thou hast favored, not the path of those who earn keen anger, nor of those who go astray. Thank you. Thank you, Miss Badre Munir. It's time to news because it is very important to keep ourselves aware of the happenings around the world and around the country. And for that, may I call Master Tawfiq. Please come over the dais to present the Oxford News Service. Master Tawfiq, please come over the dais. Good morning to you all. You are listening Oxford News Service, and the headlines are as follows. NASA postponed second shot at launching moon rocket after fuel leak. Congress tax dig at ahead of Mahangai par halla bol. Arvind Kejriwal inaugurates schools for students to prepare for armed forces. Assam got shut 34 schools after all students fail in class 10 board exam. Thank you very much. As you see that there are lots of thoughts in the school wall. It has been printed so that we can see and we can learn it. We are here with a new thought today that may help us to ensure that we want to be a better human being. And for that, may I call Master Farhan. Please come over the dais to present today's thought. Good morning to all of you. I am presenting here for today's thought. Whoever guides someone to goodness will have similar rewards. Thank you. It is indeed a very true that if you guide someone to the goodness, you will automatically drop into the goodness. So thank you very much for the beautiful thought, Master Farhan. And now may I call Mr. Santosh sir. Please come over the dais to express your views. Master Santosh Kumar Chaudhary. नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं सभी विद्यार्थीगण।
मैं समझता हूँ कि संसार में अगर महत्वपूर्ण चीज़ों की सूची बनाई जाए तो व्यावहारिक तौर पर इंसान की आवाज़ एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपका पूरा का पूरा चरित्र निर्भर करता है। इसीलिए आज के विषय के तौर पर मैंने बोली को चुना है। इंसान की आवाज़ अगर अच्छी हो, मीठी हो, सुंदर हो तो ये सम्मान दिलाती है, और अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं रहेगी तो ये आपको तमाचा भी खिला सकती है। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आप अगर अच्छी बात करेंगे तो अच्छे सम्मान पाएंगे। जिस तरह से कौवा वो किसी से धन नहीं मांगता, वो किसी से कुछ मांग नहीं लेता, लेकिन वो काय काय करता है तो उसको लोग भगा दिया करते हैं। लेकिन कोयल वो आपको कुछ लाकर नहीं देती है, लेकिन चूंकि उनकी आवाज़ बहुत मीठी है इसीलिए उनको सम्मान मिलता है। लोग संबोधन भी करते हैं तो कहते हैं कि लता मंगेशकर की आवाज़ कोयल जैसी है, क्योंकि उनमें अगर कुछ खासियत थी तो सिर्फ आवाज़ की थी। ये आवाज़ का ही जादू है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। ये आवाज़ का ही जादू है कि हम उनको इतना प्यार करते हैं। ये आवाज़ का ही जादू है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी उनके लिए सभी लोगों के मन में सम्मान है। ये आवाज़ का ही जादू है कि लता मंगेशकर को कभी कोई भूल नहीं सकता। लता मंगेशकर की आवाज़ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारा व्यवहार पूरी तरह से हमारे आवाज़ पर निर्भर करता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आवाज़ पर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, शब्द सहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष सर। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए बस एक छोटा सा वाकया यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि किसी ने जब एक बहुत बड़े मुल्क का बादशाह हुआ करते थे हारून रशीद, तो उन्होंने अपने वज़ीर से कहा कि मुझे दुनिया की सबसे मीठी चीज़ आज खिलाओ। तो वो गए और वो बकरे का ज़बान पका के लेके आए उनके लिए। और फिर दूसरे दिन कहा कि मुझे आज दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ खिलाओ। तो वो गए और फिर बकरे का ज़बान पका के लेके आए। तो उन्होंने कहा कि कल भी तुमने बकरे की ज़बान मुझे खिलाया है और आज भी बकरे की ज़बान खिला रहे हो, ये मीठी भी है और कड़वी भी है। तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ज़बान दुनिया की सबसे मीठी चीज़ है और ज़बान ही सबसे कड़वी चीज़ है। ये आप पर मुनहसिर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि संतोष सर इसी तरफ बात करना चाह रहे थे कि हमें अपनी ज़बान का इस्तेमाल इस तरह से करनी चाहिए कि सामने वाले को चुभे नहीं, बल्कि ऐसे करनी चाहिए कि सामने वाले के कान में मिठास खोले, रस खोले। तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। It was time for Mohtasim sir, but he is absent, so we cannot present the Urdu speech. But for English speech, may I call Miss Aisha? Please come over the podium for your English speech. A good teacher is like a candle, it consumes itself to light the way for others. A very good morning to the principal, the director, teaching staffs and non-teaching staff, and my dear friends. I am here to speak a few lines about the importance of teacher. So, as I said earlier, that a good teacher is like a candle. They let their light shine bright even on the darkest road so that the students do not lose the track of their destination. Teachers play a vital role in shaping the futures and personality of a student. Moreover, they see the potential of the students when no one else can. They help you become a better person and an informed one. While some people think it's easy, the role of a teacher is very challenging and equally important.
it is their responsibility to impart the correct knowledge and in the right manner. They open the minds of the young ones to the world. A world without a teacher would be definitely chaotic. Definitely chaotic. There are only a few people in our lives who impart our world, and teachers are definitely one of them. I would like to conclude my speech by saying that they may forget what you said, but they will remember how you treat. So, give respect to your teacher they deserve, because they are the one who help you get where you need to go. Thank you. Once a person asked that to whom you respect most, the God or the teacher. I may disagree with him, but he said, I respect more to the teacher. He said, why? Because the teacher led me to know that who is God. So thank you very much, Aisha, for this beautiful speech. And now, may I call Miss Shema ma'am for the pledge. Shema, please come over the podium. अस्सलाम वालेकुम। आइए मेरे साथ अहद कीजिए। हम ये अहद करते हैं हम एक अच्छा इंसान बनेंगे, हम इल्म हासिल करेंगे और इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाएंगे। हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, हम गरीबों और मज़लूमों का साथी बनेंगे, हम अमीर बनेंगे और मोहताजों की मदद करेंगे, हम एक देने वाला हाथ बनेंगे, हम रिसर्च करेंगे और नई चीज़ें ईजाद करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। And now, a very tough message is coming. The tough message is coming not from the teachers, but from the student principal. So may I call the student principal, Mr. Samar Talib. Please express your views. Good morning to you all. Dear students, I congratulate you on this gala occasion of Teachers' Day celebration in our school. You all know that education without morality and without discipline can lead you to disaster. It is therefore academic excellence with morality is the mission of our school. It is pertinent to let you know that the school administration cannot afford to keep such students for a long time who cannot work to achieve the goal, cannot run with the mission of this school. I, as the principal of this school, have a very humble message. You can consider it as an instruction as well, that the world requires people who can be beneficial not only for the humankind but for the all living organisms of this earth. We want to make you beneficial for all the living organisms. You will be only welcome in this school if you are ready to accept this challenge. Remember that फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना, फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा. Thank you very much. And now, before concluding our program, we have the last program, that is our national anthem. So may I call Santosh sir, please lead the chorus. Attention! Steady! Attention! 1, 2, 3, 4.
सारे टीचरों को लगा होगा आज कि मॉर्निंग असेंबली प्रेजेंट करना वाकई बहुत मुश्किल काम है, राइट? So really thank you very much for cooperating with us, and can I request you all to give a huge round of applause for our teachers. So thank you very much for cooperating with us, and this was our morning assembly program today, and now please go to your respective classes.